Yes, Madhavika, can you hear me? Yes, sir. Right. So last time we discussed how to get the value of the electrode potential. Any doubt in it? No doubt? Okay. Now, I'm not talking about electrochemical series, right? Ashwin, do you have any doubt till now? No, sir. Not. Okay. So what is electrode potential? What is electrode potential, Ashwin? Sir, the difference between, sorry, sir, the electrode potential is, sorry, 1 minute. Sir, Tendency it of an is, element to lose or gain electron. yes, sir. Tendency of an element to lose or gain electron is called as a electrode potential, right? Yes, sir. This electrode potential is of two types. Madhavika will tell me the types of the electrode potential. Ashwin? Sir, oxidation, standard oxidation potential and standard reduction potential. Okay, good. Oxidation potential and reduction potential. What is oxidation potential, Madhavika? It is the tendency of the element to lose electrons. Good. So I can say E naught M/M positive, right? We represent like this, X root, and reduction potential E naught Mn positive M is a 5, something like this. Loss of electron is called oxidation and gain of electron is called reduction. Loss of electron is called oxidation and gain of electron is called reduction. If we have two different elements, let it be copper and zinc, and I am giving you their reduction potential values. It is minus 0.76 volt and reduction potential of the copper is positive 0.34 volt. Now can you tell me which will undergo reduction? The copper. Copper. Zinc will not undergo reduction, right? Copper undergoes reduction, zinc will undergo oxidation. जिसका reduction potential higher होगा उसका reduction होगा. Am I clear, Madhavika? Yes, sir. Okay. Now we have calculated or we have determined the reduction potential of different elements. I'll draw the resonant electrode potential. Lithium gaining electron to become lithium. This reduction potential is minus 3.05. Right. Magnesium gaining electron, getting reduced. This reduction potential is minus 2.87 volt. Zinc gaining electron, negative 0.76. मैं अभी आपको कुछ एलिमेंट्स का वैल्यू बता रहा हूँ, सभी का नहीं लिख रहा हूँ. द कंप्लीट सीरीज इज गिवन इन योर बुक. चेक that given in a book. Check the electrode potential series, electrochemical series.
Yes, sir. So if you see, the hydrogen has a zero value. ये मैंने कल भी डिस्कस किया था. Its potential is taken as a zero. And some elements have positive values. Like copper, we have a 0.34 volt. Silver has a positive value 0.80 volt. Chlorine gaining electron becomes F negative 2.878. Palkin, can you hear me? Yes, sir. Right. लेट नहीं होना है. Yes. ओके पलकिन, कल का टॉपिक रिवाइज कर लिया आपने? Yes, sir. ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पलकिन? Pulkin, what is electrode potential? Yes, Pulkin. Any doubt till now? Pulkin, मेरी आवाज आ रही है? Okay. Yes, Pulkin, can you hear me? Sure. Okay, Shweta. Medhavika. So the complete series you can see in your book? Yes or no? Yes, sir. Right. Now, if we compare any two elements, let it be, if I say zinc other than lead, we make an electrochemical cell of this combination. We make an electrochemical cell of zinc and lead. Now, can you tell me which will undergo reduction? The lead. Lead. Why it will be lead? So because its reduction potential is high. Very good. And zinc will be oxidized. Am I clear, Ravika? Yes. So I'm writing here, lead will be undergoing reduction. And the other element, which is the other element? Zinc. Zinc. Zinc will be undergoing oxidation. So can you tell me at which electrode reduction takes place? Cathode or anode? Cathode. Cathode. And at anode, oxidation takes place. This is a reduction half reaction. This is a oxidation half reaction. This is called as a redox reaction. Called as a redox reaction. So can you tell me, in this reaction, which is a oxidizing agent? Which is oxidizing agent? जो ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प करता है. ये बताओ पहले कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है?
ये कॉरेस्पॉन्डिंग जिंक। और ऑक्सीडेशन करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट है वो है लेड, बिकॉज लेड इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द जिंक. It means lead ion is compelling zinc to lose electron. So I can say zinc is oxidizing agent. And reducing agent is reduction किसका हो रहा है? lead, लेड 2 पॉजिटिव आयन का हो रहा है, लेड का नहीं हो रहा है, लेड आयन का हो रहा है. और रिडक्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? zinc, जिंक. तो मैंने गलती कर दी है पहले. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ लेड 2 पॉजिटिव आयन और रिड्यूसिंग एजेंट हो गया जिंक. मैं क्लियर? Yes. yes sir, इट मीन्स इन दोनों में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा that will undergo reduction and will act like an oxidizing agent, and it will act like an oxidizing agent. Am I clear? yes So sir, write down the element having higher reduction potential undergoes reduction and act like oxidizing agent, and acts like oxidizing agent. And the element having higher reduction potential, low reduction potential, will undergo oxidation will undergo oxidation and act as reducing agent. And act as reducing agent. Am I clear? yes sir, Yes, sir. So if we make a cell between copper and silver, Falcon, which is the reducing agent? Sir, between copper and Silver, which is a reducing agent. copper. Copper. Medavika, which will undergo reduction? Reduction, it would be Ag, silver. Silver positive ion, right? They will undergo reduction. They will gain electron. Okay. So the first application, write down the application of electrochemical physics. Number one, determination of oxidizing agent and reducing agent. Determination of oxidizing agent and reducing agent. Is that clear? जिसका yes sir, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा डेट विल अंडरगो रिडक्शन
and will act as an oxidizing agent. जिसका reduction potential lower होगा will undergo oxidation, will act as a reducing agent. Right? Second application, determination of E0 cell without performing experiment. E0 of the substance undergoing reduction minus the reduction potential of the substance undergoing oxidation. ये दोनों ही वैल्यू जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है. ये दोनों ही वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू. इसका जिसका रिडक्शन होगा माइनस जिसका ऑक्सीडेशन होगा. Now, if I make a cell between silver and a copper, अब हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, but looking at this too, I can easily calculate the value of the E0 cell. Now, can you tell me which will undergo reduction between silver and copper? Silver. And copper will undergo oxidation. So, if you want to find out the E0 cell value of this, then the reduction potential of the silver minus reduction potential of the copper. Value put करो 0.80 minus 0.34, 0.46. Am I clear? Yes, sir. Okay. Now, if you make a cell between magnesium and a copper, calculate the E0 cell value. Sir, magnesium and copper. So 3.21 volt. कितना वैल्यू बताया? इसमें दावे का टर्म Kashmir कितना वैल्यू बताया? The answer would be 3.21. Okay. Now tell me which 3.21. is the formula. This is the formula, right? Which is undergoing reduction here? Copper and magnesium. Copper. Copper. So reduction potential of copper minus that of the magnesium. This value 0.34 volt and the magnesium value is how much? Minus 2.37. 0.34 plus 2.35. Add the two value.
Understood, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Third application is predicting spontaneity of a reaction. Predicting the spontaneity of a reaction. Whether reaction will be possible or not, right? Suppose I say I have a reaction copper plus zinc sulfate. To form here copper sulfate plus zinc, मुझे पता करना है कि रिएक्शन होगा या फिर नहीं होगा. Am I clear? This is the theoretical equation that I have written. So what you have to do is copper oxidation potential 0 here. Here it is plus 2. Zinc here is plus 2. Here it is 0. So I can say copper to copper 2 positive is oxidation and zinc positive to zinc is reduction. Understood or not? Madhavika? Yes, sir. So Yeah. find the E naught cell value is equal to E naught of the substance undergoing reduction minus the substance undergoing oxidation. So which is undergoing reduction here? Copper. Zinc Zinc. and reduction which will be copper as an oxidation. वैल्यू पुट करिए -0.76 वोल्ट. ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख के बता रहा हूँ. 0.34 वोल्ट -1.10 वोल्ट. अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है, अगर ये ई नॉट सेल का वैल्यू नेगेटिव आता है, रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, नॉट फिजिबल. Understood? Yes, sir. If it is negative, reaction not possible. If it is positive, it is possible. Now I am giving you one equation here. Zinc plus HCl to form ZnCl2 plus hydrogen gas. My question is it possible or not? Prove it systematically as we have done. Sir, values for zinc and HCl. हाँ,
Reduction potential of zinc is negative 0.76 volt and hydrogen is 0. मैंने अभी आपसे कहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खोल लो बुक में से, वहां से देखो. Sir, it is possible. Yes, sir, it is possible. कैसे पॉसिबल हुआ ये बताइए. Sir, because Sir, because there is a positive value. Okay, E naught suddenly is coming out of positive. Madhavik, are you getting positive? No. No. Okay, Madhavika, tell me, what is the oxygen potential of the zinc? Reduction potential, electrode potential of the zinc, कितना दिया? 0? Minus. Oh no, 0, elemental state. Oxidation number of zinc, 0. Hydrogen is plus 1 yeah. here. Zinc is plus 2 here. Hydrogen is 0 here. That is the first step. First Yes, step sir. is finding the oxidation number. Then we see that increase in oxidation number is oxidation and decrease in oxidation number is reduction. So zinc is undergoing oxidation and copper is undergoing reduction. Find the E naught cell value. E naught of the substance undergoing reduction minus the reduction of the substance undergoing oxidation. Reduction. Oh, yeah. I Reduction. understand that. Understood now? Of the zinc here. Yes. Put the value 0 minus 0.76. Positive 0.76. Yes. Am I clear, everyone? yes, sir. Okay. Now, I have a question here. In this beaker, I have a copper sulfate solution, right? And I have a spoon made up of the nickel. Can I use a nickel spoon to stir the copper sulfate solution? I'm giving you reduction potential values of the nickel and copper. Minus 0.25 volt and reduction potential of the copper is 0.34 volt. So can I use a nickel spoon to stir the copper sulfate solution? If yes, justify yes. If no, that is also you have to justify. No. Why not? Because they will react. But this is not I have taught you. Why will it react? You have to justify this thing.
Because copper will get reduced and nickel will oxidize. So uh, so there will be corrosion and Actually, you are giving a very theoretical answer. Okay, Ashmi, you tell me. So just 1 minute. Good. So this reaction is possible because its E naught value of cell is coming out to be a positive value. तो रिएक्शन हो जाएगा या नहीं हो? Yes, sir, it will be possible. अगर रिएक्शन हो गया तो निकल विल बी डिसॉल्विंग. Yes, sir. तो हम स्टर नहीं कर सकते. आप क्या करेंगे? तो स्टर करेंगे, चम्मच का अगला पार्ट भूल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, आपके हाथ में डंडा रह जाएगा. Yes or no? Yes, sir. So what you have to do is show it like this. पलकिन आपने क्या बताया? पलकिन सर मेरा ये वाला हुआ नहीं. चलो मेरे साथ समझिए. मैं आप सभी से कह रहा हूँ, बुक है आपके पास में? एबीसी प्रदीप ऐसा कोई बुक पलकिन है या नहीं है? Yes, sir. बल्कि हाँ नाम में जाओ तो मुझे आपकी गलती है. नेक No, sir, no, sir, no, sir. तो जितनी जल्दी हो ले लो. दीज बुक्स आर लाइक एन ऑक्सीजन फॉर यू. ठीक है, अदरवाइज मेरी क्लासेस टोटली इनइफेक्टिव हो जाएंगी. ठीक है, और जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन बुक में से प्रैक्टिस करना है. एनसीईआरटी बुक में उतना सा ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दिए हुए. तो गेट द बुक इमीडिएटली. कौन सी बुक लेनी है? केमिस्ट्री बाय प्रदीप पब्लिकेशन और मॉडर्न एबीसी. एनीवन? मेधावी का आपके पास कौन सी है? ये आकाश मॉड्यूल्स. आकाश मॉड्यूल में एग्जाम्पल सफिशिएंट है? यस सर. Okay, then practice from there, right? If you're not practicing, then मेरी क्लास में आने से कुछ नहीं मिलने वाला. Nothing. It will be totally useless class for you, right? मूवी देखने नहीं आना है. It's not a movie. ये क्लासरूम है, right? And अच्छी क्लासरूम है. ओनली आप 5 स्टूडेंट हैं अभी, तो सबके साथ फोकस चल रहा है मेरा, राइट? आपकी जो ऑफलाइन क्लास अभी कहीं होती होगी, मेधावी का also going for some offline class somewhere? No, for, sir. no, for any subject? No. No. Okay, पलकिन आप जा रहे हैं? Yes, sir. ना, वहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं फिजिक्स में? So for physics, I think so there are 4 to 5. Okay, and what about other subject, mathematics? Mathematics around 13 to 14. Okay, 14 स्टूडेंट और हमारे पास 5 स्टूडेंट. कहाँ पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, है ना? मैं आपके एक एक चीज़ को देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैं, राइट? आप छुपे बैठे हुए नहीं है, सीधा आपका चेहरा देख पा रहा हूँ. जरा सा मैं चेंज करूँगा आपके साथ में तो मैं आपकी कॉपी भी देख पाऊंगा. बस आपके Yes, है ना, sir. देख पाऊंगा ना. तो बस आपने अपने Yes, sir. कैमरे को कॉपी पे करना है तो कॉपी भी देख पाऊंगा. तो इट इज़ मोर इफेक्टिव क्लास. इसका इफेक्टिवनेस का वेस्ट मत करो. ऑन द सेम डे यू हैव टू स्टडी, राइट? अदरवाइज नेक्स्ट डे इट विल बी टोटली यूजलेस फॉर यू. पता नहीं चला लास्ट का तो पिछला क्या पढ़ा था, कुछ याद ही नहीं है ना पलके?
आपके आते ही मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इतना कहते ही आपका इंटरनेट खराब हो गया, है ना? Yes, sir. आपने किया था या फिर आप हो गया था? So वो बाय चांस ही हो गया था. Then चलो I reconnected again. चलो, मतलब वो ऐसे क्वेश्चन आंसर के लिए डेली रेडी रहिए, पढ़ के आइए, ठीक है? डिस्कनेक्ट नहीं करना है अपने आप को, क्वेश्चन पूछता हूँ और आप डिस्कनेक्ट कर देते हो अपने आप को। ठीक है, तो चलिए आप समझेंगे क्या है। अगर आपने निकल का स्पून कॉपर सल्फेट में डिप भी कर दिया, जस्ट डिप भी कर दिया, स्टरिंग करेंगे डिप के, अगर ये रिएक्शन हो गया तो निकल सॉलिड से निकल आयन बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? और आयन डिसॉल्व हो गया, आयन बन गया तो निकल डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व हो गया तो स्टरिंग नहीं कर सकते, इट इज नॉट यूजफुल टू स्टर, है ना? तो हम ये चेक करना है कि ये रिएक्शन होगा या फिर नहीं होगा, चेक करते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, और यहाँ पर क्या हो रहा है ये बताना है आपको। कॉपर आयन के साथ में क्या हो रहा है और निकल के साथ में क्या हो रहा फिर कॉपर के साथ रिडक्शन एंड इन निकल ऑक्सीडेशन. है, कैसे हो रही है, जस्टिफाई करो। Sir, because in nickel the electrode potential is नहीं zero. नहीं 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 नहीं, And नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। sir, because it is neutral in solid state and in नहीं aqueous state ऐसे it नहीं, has lost मैंने two गलत electrons. गलत गलत है अश्विन, गलत हो गया। आपने सबसे पहला स्टेप करना है फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। निकल एलिमेंटल स्टेट पर है तो 0, यहाँ पर आ गया कॉपर +2, यहाँ पर आया 0, यहाँ पर आया +2। ये बात समझ में आता है सबको? Yes, sir. अब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, व्हाट यू कॉल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर? Reduction. ऑक्सीडेशन। Sorry, oxidation. Sorry, sir. एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। आइडेंटिफाई लाइक दिस, यहाँ पर क्या हो रहा है, इट मीन्स निकल इज अंडरगोइंग, अरे मैंने गलत कर दिया, उल्टा कर दिया मैंने। change. Decrease in oxidation number increase in oxidation number is oxidation and decrease in oxidation number is reduction. Am I clear? So find the A naught cell value. A naught of the reduction minus A naught of the oxidation. A naught of oxidation minus A naught of reduction. किसका रिडक्शन हो रहा है? Copper. कॉपर का। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? Nickel. निकल का। कॉपर का वैल्यू कितना है?
निकल का वैल्यू कितना दिया मैंने आपको, -0.25 वोल्ट. It is coming out with something positive value, right? अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है देन इट मीन्स रिएक्शन इज पॉसिबल. रिएक्शन इज पॉसिबल. अगर रिएक्शन पॉसिबल होगा देन वी कैन नॉट स्टर इट. We cannot. Am I clear? So you have to prove it like this mathematically. Medhavika, you are just giving me a very 10th class style answer. It will react. So I didn't know that you're supposed to answer the question this way. Understood now? Now understood? Noted? Yeah. Now, wait a minute, please. I am giving you one assignment right now. By tomorrow, you must submit it before the class. Right? Have I done the electrolysis with you? No, sir. No. Subjective. Just a minute. Let me give you homework right now. Assignment I have sent, right? इस असाइनमेंट में आपने क्या करना है, नोट डाउन सब क्वेश्चन नंबर्स जो आपने करके भेजने हैं. 1 2 3 7. नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर जो आपने करने हैं. 1 2 3 7 9 after 9 you have 16 17 18. 16 17 18. These questions are your homework. बाकी असाइनमेंट बाद में करेंगे. राइट राइट पलकिन. Yes, sir. Okay, this is your homework. And one thing more now, right now,
I'm sending you this one also, this video. श्री राम को एग्जैक्टली 14 साल की वनवास क्यों हुई? I mean, why not 5 years or 10 years or maybe even 15 years or 20? Cell representation. Any doubt? Tell me. No doubt. No. The last class also we have uploaded here, right? Why zinc is getting oxidized and why copper is getting assignment, and the last two classes recording. First listen to the recording, write it again, solve the question then. This is the homework, right? If you have any doubt कि problem है अभी subject समझ में नहीं आया था तो you can listen to the recording again. Okay. And book से भी question practice करना है. Okay. Now, this is your homework. I have another question now. Can chlorine gas be stored in copper cylinder given reduction potential of the copper 0.34 volt and reduction potential of chlorine 1.36 volt? Can we store it or not? Work upon this question. Sir, it cannot be stored. Why? Can you show me the calculation? Yes, sir. I have to send the photo. हाँ, टेलीग्राम में भेज Yes, sir. टेलीग्राम में भेज. Okay, sir. I'm waiting. Okay. Yes, sir. I have sent. You are saying? Yes, sir.
रिएक्शन हो जाएगा, ये कैसे पता चला आपको? ये तो प्लस क्यों कर रहे हो, माइनस क्यों नहीं किया आपने? हमारे फॉर्मूला तो माइनस वैल्यू है ना, तो प्लस करना है मैडम। Yes. ये क्या खेलते हैं? आई एम नॉट गेटिंग। Excuse me, sir. यस, So can you please tell the equation? ओके। देखिए बच्चे, सिंपल सी बात है, कॉपर का सिलेंडर है और बीच में क्लोरीन गैस फिल की है। तो आपने करना क्या है, कॉपर और क्लोरीन का रिएक्शन लिखना है। ऐसा रिएक्शन होना चाहिए, Yes, sir. राइट। अब इसमें क्या हो रहा है, 0 to -1, 0 to +2. It means the chlorine is undergoing reduction and copper is undergoing oxidation. Am I clear? पहला स्टेप Yes, आपने sir. ये दिखाना है। बल्कि आप क्या कर रहे थे, कहाँ से आंसर उतार लिया आपने, कॉपी कर ले लगता है जैसे वो। Sir, why they हाँ were correcting it. हाँ, क्या किया? Sir, I'm doing that only. क्या कर रहे हो? क्या लगता है वो गूगल सर्च कर लिया आपने आंसर ना, उसमें ऐसे No, sir. उसमें आंसर ऐसा लिखा होता है। ठीक है, बल्कि कोई बात नहीं, मेरे को पता है वहाँ पर आंसर, मैं गूगल अभी करके दिखाता हूँ, आप वहाँ पे ऐसे मिलेगा जैसे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ फाइंड द E naught set value. E naught of the substance undergoing reduction minus the oxidation. रिडक्शन किसका हो रहा है? क्लोरीन का, और यहाँ पर कॉपर का वैल्यू, राइट। क्लोरीन वैल्यू कितना दे दिया, 1.36 वैल्यू, माइनस कॉपर का वैल्यू 0.34 वोल्ट, नेगेटिव, राइट। और ये वैल्यू आ गया 1.02 वोल्ट। देखा, बिल्कुल वही आंसर आ रहा है ना जो आपने किया है, 1.02। आपका भी आंसर था, ये देखो कैसे आ गया, ये मुझे समझ नहीं आया, Yes. मुझे समझ नहीं आएगा क्या? Sir, sir, I have done like this only, but values are. हाँ, कुछ प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है ना, Yes, sir. सिस्टमेटिक नहीं हो रहा है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, इट मीन रिएक्शन हो जाएगा एंड वी कैन नॉट स्टोर, chlorine cannot be stored, cannot be stored in copper cylinder. Am I clear? Yes, sir. Vedavika? Yes. On this electrochemical series, I have sent you, right now I have sent you 5 questions again on your Telegram group. This question you must do it before our next class. Okay? Yes, sir. That is your homework. Right? बिना पढ़े क्लास में नहीं आना है और क्लास मिस कभी नहीं करनी है।
अगर पढ़ा नहीं तो नहीं आना, ऐसा भी नहीं है, पढ़ के आना है। मैं क्लियर? डोंट, Yes, sir. हाँ, लाइटली मत लीजिए क्लास को, अदरवाइज ये वेस्ट हो जाएगा आपके लिए क्लास, राइट? चलिए आज इतना ही करते हैं, until tomorrow sharp at 9 o'clock, right? Okay. Thank you, sir.